have been razed to ground. And yet, the international community has yet to act. Speeches, resolutions, and commitments are still to see the light of the day. Whether these are Security Council resolutions or other international forums, including ICJ at Hague, nothing has helped in bringing ceasefire in Gaza. And the world has not seen this kind of carnage in contemporary history. I want to share my sincere feeling with you, my dear students, our brothers, our sisters, that Pakistan is your second home. Our hearts are there for you. Our houses are there for you. Our institutions are there for you. Our teachers are there for you. Everything we can do will not be enough to make you comfortable in Pakistan. I was at UNGA session and we heard speeches after speeches speaking about Palestine, speaking about how Israeli forces are committing genocide in that part of the world. And there were presidents, there were prime ministers, there were heads of states, kings. But after that session, blood still flows in the streets of Gaza. Schools are being bombarded. Hospitals are being smashed. And the world is a silent spectator. I have, in one of my speeches, drawn a stark comparison, a parallel. We know how peace was achieved in Northern Ireland. We know how East Timor was carved out as a separate independent unit. And we know how Sudan was divided. And we know how Bosnia's cries were finally heard after thousands and thousands of Muslims were martyred over there. And collective graves were seen by the world. Only then international community came to action. This stark comparison tells us that when the powerful and the mighty wants to achieve something, it is achieved. And when the powerful and mighty want to ignore something, it is ignored. Yet, the hopes of Palestinian people gives inspiration to the entire world, facing these stupendous challenges, losing every member of their families. The other day, the world saw two sisters traveling together, and then the elder sister holding the younger sister. God knows where their mother and father is. These kind of heart-wrenching stories have touched every heart, living heart in this world. But it has not touched
those who matter and those who have to take a decision to save the people of Gaza and Palestine and Lebanon. Therefore, my brothers and sisters, this is just not a gathering of students, it's a gathering of a family. And I want to assure you that Pakistan is your second home. This first batch of 151 students, financed and promoted by great philanthropist from UK known as the Gaza Health Outreach Program for Education, and Dr. Yusufuddin, Dr. Irfan Malik. They have already earned places in Jannah, inshallah. I have already instructed my colleagues, not instructed, requested them that we have to invite many more 100 students from Gaza to Pakistan who can get highest quality education in Lahore, Karachi, Peshawar, Quetta, Islamabad, and we will be playing host to you. Believe me, it's not a favor. It's a responsibility which I have discharged long ago, but it's never too late. And while the cost of this batch of students will be borne by Al Khidmat Foundation and those great people sitting there, I will make sure that while additional students come here in Pakistan, not only we will provide them finest quality education, but it will be all free of cost, borne by the government of Pakistan, inshallah. I will therefore request Dr. Bharat and Secretary Health and Secretary Foreign Affairs to kindly take up this challenge immediately, and through proper coordination, please come up with your recommendations without any delay as to how many more students, brightest of the bright, can we invite to Pakistan and house them in the best learning streets of Pakistan. This should be done not in months but in days and weeks. So, my dear brothers and sisters, while you have left Gaza, your birthplace, and your dear ones behind you, and I wouldn't want to ask you, rather don't have the courage to ask you, that how many of you have lost your dear and near ones over there. But let me assure you that our heart pumps with your heart. We are one family, and you will, inshallah, not feel. Of course, you will miss your parents, you will miss your relatives, but you have your brothers and sisters here who will look after you like a family. Antum ikhwan, hada baytukum, Pakistan baytukum, inshallah. قلبي مفتوح لكم يعني أي وقت إن شاء الله، ونحن موجودين مشتاقين، هذا فرض علينا يعني.
अंतुम लैसत दयूफ, अंतुम इख्वान वल्लाहुल अज़ीम, पाकिस्तान बैतकुम व बैती। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जितना मेरा है उतना ही आपका घर है। खुले दिल से फ़लस्तीनी तलबा को खुशामदीद कहते हैं। उन्होंने कहा कि आप हमारे मेहमान नहीं, हमारे भाई हैं। फ़लस्तीन में होने वाली बर्बरियत पर दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। आलमी बरादरी ने जंगबंदी के लिए मौसर किरदार अदा नहीं किया। इसराइल की जानिब से बेगुनाह फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी अब तक जारी है। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। सलामती काउंसिल की करारदादें और आलमी अदालत इंसाफ बेबस नजर आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम इस मुश्किल घड़ी में फ़लस्तीन और लबनान के साथ खड़े हैं। फ़लस्तीन में शहर के शहर और गाँव के गाँव तबाही का मंजर पेश कर रहे हैं। इसराइल ने 43,000 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। पाकिस्तान आपका दूसरा घर है, हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में 145 मेडिकल तलबा की मौजूदगी सिर्फ शुरुआत है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त फ़लस्तीनी तलबा के साथ ग्रुप फ़ोटो के लिए मौजूद हैं और ये मनाज़िर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। जब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ फ़लस्तीनी तलबा के साथ घुल मिल गए, उनका हौसला बढ़ाया, ग्रुप फ़ोटो भी बनवाया और ये सेशन आप पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ फ़लस्तीनी तलबा के साथ मौजूद, फ़लस्तीनी तलबा का हौसला बढ़ाया, उनके साथ घुल मिल गए, एक फ़ोटो भी ग्रुप में बनवाई और उन्होंने अपनी तकरीर में ये भी कहा कि पाकिस्तान जितना हमारा है उतना ही आपका भी है। आप हमारे मेहमान नहीं, हमारे भाई हैं और खुले दिल से फ़लस्तीनी तलबा को खुशामदीद भी कहा। ये थी PTV ताज़ा तरीन। एवरी पर्सन इज अंडर द सेल्फ असेसमेंट स्कीम, उसी मॉडल में चले जाएँ जो 2001 में था। अब उसमें क्या सिचुएशन है कि मैं ये देखता हूँ कि यार मेरे घर में और भी 3 लोग हैं जो टैक्स फाइलर हो सकते हैं और आई एम श्योर कि मुझे उनको दिक्कत नहीं होगी टैक्स देने से, तो मैं वो भी दे रहा हूँ। तो जो आगे बढ़ने की जो स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं, जो हार्डल्स हैं, वो टैक्समैन है, लेकिन इसको भी इम्प्रूव किया जा सकता है। जो आपका पहला क्वेश्चन था वो उसमें कवर करता है डिजिटलाइजेशन, वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हुआ, लेकिन क्या हमने उस डिजिटलाइजेशन का लेकिन फराज साहब, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ अगेन कि हमारे पास यही सिर्फ एक इशू नहीं है कि टैक्स मैन जो है वो आपको एक थोड़ा सा उसको